एक मिनट। Good evening, everyone. I hope you all are doing very well. So let's proceed with the class. Now listen, I think till yesterday we have completed all the important concepts, aspects, and possible mode of criticism of human relation theory. I hope the concepts and the consideration with regard to every approach and every theory what we have discussed in the recent past is very much clear in your mind. And today I am coming to one more important category or set of theory, again a very important one. You can say basically in the field of organization and public administration, called as the behavioral theory or behavioral approach. Now listen, it is the last important theory that we have to consider by taking the perspective of long type of question. ठीक है, इसके बाद एक और थ्योरी होगी, उसको हम लोग बोलते हैं सिस्टम अप्रोच. बट द क्वेश्चन विद रिगार्ड टू सिस्टम अप्रोच कुड बी आस्क्ड इन 5 marker or in 3 marker, mainly in 5 marker. So we have to cover system approach by taking the perspective of 50 words or 70 words, I mean 5 marker type of question. But again the question about behavioral approach could be asked in long type also. Long type I mean of course the question of 11 marker where you have to write 200 words. And again there are so many dimensions of behavioral theory which could be asked by the examiner. I agree. So let's start one more important theory of organization or administration called as the behavioral theory or the behavioral approach, and then we are in a position to wind up every concept and every aspect of public administration with regard to the theories of organization. चलो इस पर बात करते हैं behavioral theory पर. Now focus. So in the previous class we have discussed about the human relation theory, and if you remember I told you there are so many outcomes and elements of human relation theory. Mainly the human relation theory is working on or focusing on human perspective, informal organization, and taking the regard of some social norms and standards which can increase the productivity and production. But when I compare the behavioral theory, it was also proposed in 1930s, and number of scholars are there which have contributed in the evolution of behavioral theory. But अगर हम behavioral theory पर बात करें तो ये एक रिफॉर्मेटरी वर्जन है, प्रोसेस्ड वर्जन है ह्यूमन रिलेशन थ्योरी का. मतलब इट इज अ मच मोर सिस्टमैटिक, एम्पेरिकल, मच मोर डेटा बेस्ड और इंफॉर्मेटिव स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर. दिस सिस्टमैटिक, एनालिटिकल, डिस्क्रिप्टिव, एम्पेरिकल and scientific study of human behavior is called as behavioralism. Now human relation theory, although it studied human behavior, but of course the theory was not empirical. Okay, they have taken the regard of very small sample size of workers, and then of course they have postulated some outcomes about the human behavior. But behavioral theory is actually analyzing the human behavior, provide a type of description of human behavior in different situation. मतलब बिहेवियरल थ्योरी का मेन एम ये था कि अलग अलग सिचुएशंस में अलग अलग समय पर जो ह्यूमन बिहेवियर होता है वो कैसे होता है. ठीक है, मान लीजिए मैं एग्जांपल देता हूं आपको कि एक किसी कंपनी में, फैक्ट्री में एक टारगेट को अचीव करना है, और टारगेट को अचीव करना है 1 हफ्ते के अंदर. ठीक है, बट द वर्कर्स आर नॉट कॉम्पिटेंट इनफ ऑफ कोर्स टू कवर द होल, कंप्लीट द होल टारगेट विद इन 1 वीक. ठीक है, तो अब मैनेजर जो होगा वो कैसे वर्कर से काम कराएगा, और वर्कर 1 हफ्ते के अंदर कैसे काम करेंगे. मतलब उस सिचुएशन में ह्यूमन बिहेवियर क्या होता है. क्या मैनेजर पैनिक कर जाएगा? Whether the manager is in a position of course to motivate the people, I mean the workers or not, or whether the workers are competent enough of course to get self-motivated to work for a desired target or desired objective, and the objective would be of course to cover the whole work within 1 week. तो अगर एक ऐसी सिचुएशन आ जाए जहां पर थोड़ा सा प्रेशर है मैनेजमेंट के ऊपर या वर्कर के ऊपर, तो उस समय ठीक है मैनेजमेंट का और वर्कर का दोनों का ह्यूमन बिहेवियर यानी बिहेवियरल एस्पेक्ट क्या होगा, वो क्या डिसीजन लेते हैं, how the workers are getting self motivated, how the administrator or the manager is of course motivating the worker, how they are working for a common purpose, in which particular manner of course the manager is showing some leadership skills. I agree. So all these aspects of human behavior are very well discussed by, described by, analyzed by, studied by the theory, the propounders of behavioral theory. ठीक है, behavioral theory is also called as social psychological approach or new human relation theory.
Now, why new human relation theory? Because again, it is a much more systematic and empirical. Empirical theory is one which is based on some scientific base, on some scientific consideration, on some scientific study with all the supporting evidences. तो अगर ह्यूमन बिहेवियर की स्टडी साइंटिफिक तरीके से की जाए अलग अलग सिचुएशंस में, अलग अलग सिचुएशन से मेरा मतलब है कि अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन की प्रोडक्टिविटी बहुत अच्छी है तो ह्यूमन बिहेवियर क्या है? ह्यूमन बिहेवियर से मेरा मतलब है वर्कर्स का बिहेवियर और मैनेजमेंट का बिहेवियर, लीडर का बिहेवियर और एम्प्लॉयज का बिहेवियर, दोनों का वो क्या है? अगर एक ऑर्गेनाइजेशन अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहा तो ह्यूमन बिहेवियर क्या है? एक पर्टिकुलर सिचुएशन में जहां पर ज्यादा काम करना है तब ह्यूमन बिहेवियर क्या है? एक पर्टिकुलर सिचुएशन में जहां पर इंपॉर्टेंट डिसीजंस लेनी है तो ह्यूमन बिहेवियर क्या है? एक पर्टिकुलर सिचुएशन में जहां पर मैनेजर को लीडरशिप स्किल दिखानी है तो ह्यूमन बिहेवियर क्या है? So all these aspects of human behavior, be very sure, are very well analyzed by, described by the concerned concept. The concept is called as what? Behavioral approach. I hope you got my point. The concept is known as behavioral approach. Now initially what we are going to do, we are going to discuss, you can say the outcomes of behavioral approach, I mean the main features of behavioral approach, what they want to achieve, what they want to propound, and how they have studied the human behavior in a much more systematic and empirical manner. And then we can of course highlight the grounds of criticism of behavioral approach. We can evaluate the criticism also, and of course we can highlight some more principles of elements of the concerned concept. ठीक है? So this is the whole framework for you. जरा बोर्ड पर देखिएगा, मैं कुछ बताना चाहता हूं आप लोगों को. जैसे when I talk about the introduction of behavioral approach, you have to write some important phrases or sentences in the answer. जैसे the evolution of behavioral approach has taken place in 1930s. It was developed by some scholars, I mean some behavioral, you can say basically sociologists we can say. Their name was, the most important name is Chester Bernard, Herbert Simon. Then we have one more important scholar. If you see in the board, that is Maslow, McGregor, Argyris, Herzberg. So numbers of scholars are there which have of course propounded the concept of behavioral approach. Okay? The behavioral approach is also called as what? Nothing but the social psychological approach or new human relation theory. With that, one more time, it develops a practical viewpoint about human behavior. And that practical viewpoint is based on some scientific research of human behavior in different situations. These different situations are very much acknowledged in every setting. In every setting means it could be a private organization or a public administration. तो अगर मैं एक एडमिनिस्ट्रेटर की बात करता हूं, ठीक है, जैसे मान लीजिए कि आईएएस है या एसडीएम है, तो ये अलग अलग सिचुएशंस में कैसे डिसीजंस लेता है, ये अलग अलग सिचुएशन में अपनी लीडरशिप स्किल को कैसे ऑपरेशनलाइज करता है, ये अलग अलग सिचुएशन में जो अपने वर्कर्स हैं, जो उसके सबऑर्डिनेट्स हैं, उनको कैसे मोटिवेट करता है. ठीक है, मतलब अलग अलग सिचुएशन में एक एडमिनिस्ट्रेटर है, उसका बिहेवियर कैसे हो सकता है, उस बिहेवियर की स्टडी करना ही बिहेवियरल अप्रोच का मेन ऑब्जेक्टिव था. And once the systematic, empirical and scientific study of behavior had been done, of course, by the propounders of behavioral approach, then they can develop some universal laws about human behavior which could be applied in every organization of every country. I mean, once we are in a position to develop, one more time, be very sure, some scientific, analytical, descriptive, much more empirical, you can say basically pattern of human behavior. अगर हमें ये पता चल जाता है कि एक पर्टिकुलर सिचुएशन में एक जो एडमिनिस्ट्रेटर है या मैनेजर है या वर्कर है वो कैसा बिहेव करता है, तो उसके बाद हम कुछ यूनिवर्सल लॉज बना सकते हैं कि अगर ऐसी सिचुएशन होगी तो एक डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर ऐसा बिहेव करेगा. अगर सिचुएशन मान लो डिजास्टर मैनेजमेंट की हो गई, किसी डिस्ट्रिक्ट में अगर फ्लड आ गया, ड्राउट आ गया, अर्थक्वेक आ गया या कम्युनल क्लैश हो गया, तो उस सिचुएशन में बिहेवियर जो होगा एडमिनिस्ट्रेटर का, ऑफिशियल्स का या डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर का या एसडीएम का, वो क्या होना चाहिए एज ए क्राइसिस मैनेजर, मतलब कैसे वो रिस्पॉन्ड करते हैं. ठीक है, एंड वंस वी आर इन अ पोजीशन टू स्टडी और एनालाइज द practical viewpoint of human behavior, then we can develop some universal principles. And the principle could be that in a particular situation, an administrator is behaving in this particular manner. In a particular situation, an administrator is taking this particular type of decision. In a particular situation, a particular manager is of course motivating the workers in a particular manner.
जैसे जब आप सेलेक्ट हो जाएंगे और आपकी ट्रेनिंग होती है, तो ट्रेनिंग के समय बहुत सारे एडमिनिस्ट्रेटर्स आपके साथ आएंगे, वो आपको ओरिएंटेशन लेक्चर भी देंगे, वो आपको सिंडिकेट ट्रेनिंग भी देंगे। जो एकेडमी होती है, कंसर्न एकेडमी होती है, एडमिनिस्ट्रेटिव एकेडमीज होती है, उसमें अगर एमपीपीएससी की बात की जाए तो नरोना एकेडमी जो भोपाल में है। और जब भी कभी वो ट्रेनिंग आपको देते हैं, मतलब अपना लेक्चर डिलीवर करते हैं, तो अपने पास एक्सपीरियंस भी बताते हैं कि एक सिचुएशन मेरे कैरियर में, मेरी कैरियर प्लानिंग में कुछ ऐसी आई थी जिसमें मैंने ये डिसीजन लिया। ये डिसीजन हो सकता है गलत होता है या सही होता है, ये बात अलग है, पर एट दैट पर्टिकुलर टाइम आई हैव टेकन ए पर्टिकुलर डिसीजन एंड दैट पर्टिकुलर डिसीजन एबल टू अटेन द डिजायर्ड टारगेट। मतलब उस समय के लिए वो डिसीजन क्या रहा, सही रहा। अगर हम उस बिहेवियर की स्टडी कर लें कि एक पर्टिकुलर सिचुएशन में एक एडमिनिस्ट्रेटर क्या डिसीजन लेता है, और वो जो डिसीजन होता है वो हर जगह अप्लाई करा, हम लोगों ने अगर किया तो उससे हमें अच्छे रिजल्ट मिले, तो हम लोग ये बोलेंगे कि इन ए पर्टिकुलर सिचुएशन द डिसीजन मेकर, आई मीन द एडमिनिस्ट्रेटर, मैनेजर और द वर्कर्स आर बिहेविंग इन ए पर्टिकुलर मैनर, and most of the workers of different countries, of different areas, of different states, when I take the regard of India, are behaving in the same manner. ठीक है? So we have to systematically and scientifically study the human behavior. Now, what are the main features of this behavioral approach? That portion I will discuss now. एक बार और छोटी सी बात मैं क्लियर कर दूं, that human relation approach, I mean the theory which was proposed by Elton Mayo, is not clarifying, not analytically, and not descriptively actually defining the human behavior. No, the most systematic, scientific, empirical study of human behavior by much more processment of data had been done by behavioral approach. So there's a basic difference between the human relation approach and the behavioral approach. I hope you got my point. I hope you got my point. और अब हमें बात करना है कि what are the main features of behavioral approach. ठीक है? So just write an introduction about behavioral approach, then we'll move further. Agree? एक introduction लिखेंगे आप लोग जल्दी, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए, टाइटल इज बिहेवियरल थ्योरी और बिहेवियरल अप्रोच। ठीक है, लिखोगे और मैं आपको बता भी देता हूं कि इंट्रोडक्शन कैसे लिखा जाता है, फॉर्मेट क्या होगा उसका, फटाफट लिखिए। बिहेवियरल अप्रोच इज रिगार्डेड एज ए modified, systematic and innovative version of human relation theory, comma, human relation theory also called as socio-psychological approach, and new human relation approach. Socio-psychological approach and a new human relation approach. New human relation approach. Continue. It aims at a scientific study of organizational behavior. It aims at a scientific study of organizational behavior with the application of technologies and conclusions of sociology, sociology हम आगे बात करेंगे, sociology, psychology and anthropology. Sociology, psychology and anthropology. Continue.
The basic goal is to develop. The basic goal is to develop. Basic goal is to develop practical viewpoint about. Basic goal is to develop, जो मैं बार बार बोल रहा हूं, practical viewpoint about. Practical viewpoint about human behavior. Practical viewpoint about human behavior. Human behavior by a systematic. Human behavior by systematic objective. By systematic objective. Systematic objective and empirical studies. Systematic objective and empirical studies. I hope so the introduction is very much clear. Systematic objective and empirical studies. And empirical studies. फिर मैंने आपको बताया, you can of course watch this particular PPT also, that there are so many scholars which have contributed in the evolution of behavioral approach. ठीक है, I want to demarcate those scholars also. I mean some sociologists also, if you see closely. There was one scholar called as Chester Barnard, one of the most important scholar. Then we have of course Herbert Simon, actually the most important scholar, Herbert Simon. Then we have some more scholars like Maslow, McGregor, Argyris, Herzberg, number of them are there. Okay. So these are the scholars which have proposed a theory called as behavioral theory, a systematic study or a practical viewpoint of human behavior. Done? तो ये तो बात हो गई इंट्रोडक्शन की. अच्छा, now I am coming to the basic features and principles of human behavioral theory. I mean, what are the basic elements or what are the basic outcomes with features of behavioral approach? उस पर थोड़ा बात करते हैं और देखते हैं what we can discover now. Focus. So let's come to the features and the principles of behavioralism or behavioral theory. Focus. देखिए. So when I talk about features of this theory, although here I have demarcated some features, I mean approximately you can say 7 features, although it's depends on your leverage, that how many features you want to write in the examination. You can write 5 features, 6 features, it depends on you. It depends on the word limit also, of course, of the concerned question and so on and so forth. But here I have demarcated actually 7 features. Some features I am going to discuss, of course, in the class. कुछ फीचर्स के बारे में मैं क्लास में डिस्कस करता हूं और कुछ फीचर्स के बारे में ऑफ कोर्स जो मैं हमेशा करता हूं, होमवर्क आपको देंगे ताकि आप भी थोड़ी रिसर्च करो, पता करो कि ये थ्योरी या कंसेप्ट आखिर है क्या. कंसेप्ट में क्लियर करता हूं आपके. ठीक है, चलिए तो फोकस करिए. द वेरी फर्स्ट फीचर ऑफ दिस पर्टिकुलर थ्योरी इज कॉल्ड एज डिस्क्रिप्टिवनेस. I mean the theory is much more analytical than perspective. So what this descriptive theory is all about, उस पर बात करेंगे. The second important theory is called as dynamism. I mean which particular dynamic element, variables or features this particular theory is incorporating in itself. ये theory dynamic क्यों है? कौन से human relation के या human behavior के dynamic factors थे जो इस theory ने incorporate किए, अपने आप में सम्मिलित किए, उन पर भी हमें बात करना है. ठीक है. Then we have of course one more important feature of this theory called as informal relation. I mean again the theory is focusing on informal relation like human relation theory if you remember. ठीक है. Then when I talk about the basic nature of the theory, the basic nature of the theory is its empirical inclination. अच्छा, empirical का मतलब होता है, समझिएगा कि 2 तरह की स्टडीज होती हैं. एक होती है नॉर्मेटिव और दूसरी होती है एम्पेरिकल. ठीक है. अच्छा, नॉर्मेटिव का मतलब होता है द कंसेप्ट और द स्टडी विच इज बेस्ड ऑन मच मोर ऑब्जर्वेशंस. So those studies which are based on observations, anticipations, perceptions are called as what? Normative theories. And those concepts which are based on scientific research, analytical skill, data, information, they are called as what? Empirical theories. ठीक है. So normative theories are much more observatory, but empirical theories are much more scientific. Because they are based on some scientific ground, they are based on some data analysis, they are based on some processing of information, everything. So empirical theories are much more logical and scientific as compared to normative theory, but sometimes the normative theory is also beneficial, although the behavioral theory is much more empirical in its orientation. ठीक है. इसका एक और फीचर है behavioral theory का और वो है quantification and formal theory construction. In which particular manner the quantification had been done by the concerned theory, इस पर हम बात करेंगे.
And then of course the last two important features, one is it is interdisciplinary, and finally it is mainly focusing on the theory of legitimacy. It is focusing on the theory concept of legitimacy. Legitimacy का मतलब होता है acceptance, ठीक है? So these are 7 important features of the behavioral approach, the outcome or the nature of behavioral approach. If the question is asked about the principles or the features or the nature of behavioral theory, then always you have to write all these 7 important features or elements or principles of behavioral approach. ठीक है, मैं आपको फिर बता दूं, कुछ के बारे में हम डिस्कशन करते हैं, कुछ के बारे में मैं होमवर्क भी दूंगा, थोड़ी रिसर्च आपको खुद को करनी पड़ेगी, क्योंकि ये कोलैबोरेटिव एफर्ट होना चाहिए जब भी किसी टॉपिक को हम लोग पढ़ रहे हैं। डायरेक्शन देने का काम मेरा है, आपके नॉलेज को प्रोडक्टिव बनाने का काम मेरा है, कंसेप्ट क्लियर करने का काम मेरा है, लेकिन बाद में जाके और रिसर्च करने का काम भी और अपना वैल्यू एडिशन करने का काम भी आपका होना चाहिए, ठीक है? सो लेट्स कम टू द वेरी फर्स्ट फीचर ऑफ बिहेवियरल थ्योरी कॉल्ड एज डिस्क्रिप्टिवनेस, ठीक है? डिस्क्रिप्टिवनेस। अच्छा, डिस्क्रिप्टिवनेस का मतलब होता है कि दिस पर्टिकुलर थ्योरी जस्ट हियर इज मच मोर एनालिटिकल, ठीक है? इट इज मच मोर एनालिटिकल एंड लेस पर्सपेक्टिव। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय एनालिटिकल? एनालिटिकल का मतलब होता है कि द थ्योरी इज एनालाइजिंग एवरी एस्पेक्ट ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। इट इज मच मोर एनालिटिकल, मतलब in a particular situation how the human behavior is taking a particular decision, or in a particular situation how the human behavior is responding, that analysis would be done by the concerned theory. एक particular situation में, ठीक है, particular situation में कोई मैनेजर है या लीडर है या एडमिनिस्ट्रेटर है, उसका बिहेवियर क्या होता है, उसको एनालाइज करना, उसको एनालाइज करना या उसको इन्वेस्टिगेट करना, उसको समझना, सिस्टमैटिकली समझना, इस थ्योरी का मेन एम था। एंड दैट्स व्हाट द थ्योरी इज कॉल्ड एज व्हाट? द डिस्क्रिप्टिव थ्योरी। इट इज डिस्क्राइबिंग, एनालिटिकल, एनालाइजिंग एवरी एस्पेक्ट ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। आई वांट टू गिव वन एग्जांपल फॉर दैट, फोकस। देखिए, एक स्कॉलर रहे हैं हर्बर्ट साइमन, एंड मिस्टर हर्बर्ट साइमन, I will discuss some outcomes of Herbert Simon in the coming time also. Herbert Simon has proposed a model of decision making, and then he proposed a norm, actually a principle called as bounded rationality principle. The bounded rationality principle is based on satisfying decision but not on maximizing decisions. So what this decision making process is all about, and how the behavioral theory becomes much more analytical with regard to decision making, इस पर थोड़ा सा मैं बात करना चाहता हूँ। अच्छा, हर्बर्ट साइमन का ये कहना था, मैं सिंपल लैंग्वेज में कनेक्ट करता हूँ आप लोगों से, उनका ये कहना था कि दिन भर, अगर हम लोग बात करते हैं व्हेन वी आर ऑफ कोर्स वेकिंग अप इन द मॉर्निंग एंड ऑफ कोर्स स्लीपिंग इन द इवनिंग, तो दिन भर जो हम लोग काम कर रहे हैं या फिर अलग अलग सिचुएशंस में हम लोग जा रहे हैं, सुबह उठ रहे हैं, ब्रश कर रहे हैं, ऑफिस के लिए निकल रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, कॉलेज के निकल रहे हैं, व्हाट आर द केस में भी, तो हम हर समय कुछ ना कुछ डिसीजंस लेते हैं, हर समय, एवरी टाइम ऑफ कोर्स वी आर टेकिंग सम डिसीजंस, ठीक है? सो ह्यूमन माइंड इज फुल ऑफ डिसीजंस। जैसे मान लीजिए कि ये एक बहुत ही बड़ा डिसीजन था कि आपने चूज किया कि आई वांट टू परसू माय कैरियर इन सिविल सर्विसेज एंड आई हैव टू प्रिपेयर फॉर एमपीपीएससी और यूपीएससी। तो ये एक कैरियर का बहुत बड़ा डिसीजन था आपके लिए ना। हो सकता है कि देयर कुड बी सम एस्पिरेंट्स which are much more competent, which are having very good pass record. I mean, their academic qualification is very much personified. But there are of course some students which are not as stronger as compared to the other students. There could be some students which are having some problems of writing their answer, understanding the language, ठीक है, memorizing the issue, what are the case में भी। तो हर एक बच्चे को ये पता होता है कि उसकी कमियां क्या हैं, खामियां क्या हैं, लिमिटेशंस क्या हैं, लेकिन फिर भी एक बच्चे ने ये डिसीजन लिया कि मुझको सिविल सर्विस की तैयारी करनी है, वो अपनी मेहनत से इस एग्जामिनेशन को क्रैक कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है और करते भी। और कभी कभी कुछ बच्चे ऐसा हो सकते हैं कि जो मिनिमम एफर्ट से एग्जामिनेशन को क्रैक कर सकते हैं, लेकिन दोनों बच्चे डिसीजंस ले रहे हैं। अब देखो ये कितना इंपॉर्टेंट डिसीजन था आपके कैरियर का या आपके लाइफ का, क्योंकि उसके साथ आपके पास कुछ अल्टरनेटिव्स होंगे कि मैं प्राइवेट फर्म में नौकरी कर लूं, मैं बिजनेस कर लूं, मैं कुछ और काम कर लूं, मैं एक्टिविटीज में आगे पढ़ना चालू कर दूं, मैं सिविल सर्विस की तरफ क्यों जाऊं। लेकिन कहीं ना कहीं से आप मोटिवेट हुए, एक जील था, एक इम्पीटस था,
एक कुछ हायर ऑब्जेक्टिव को आप कह सकते हो प्राप्त करने की एक मंशा थी, आप कह सकते हो सिंपल लैंग्वेज में, ठीक है। तो आपने डिसीजन लिया। अब डिसीजन सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है, बट इन अ पर्टिकुलर सिचुएशन यू हैव टेकन अ पर्टिकुलर डिसीजन। सो एवरी टाइम वी आर टेकिंग सम डिसीजंस। जैसे मान लीजिए मुझे अपने घर से निकलना है एंड आई हैव टू टेक क्लास ऑफ योर्स, but I am not having my car, then I have to take decision that whether I have to go, of course, by bus or by taxi or by auto or by whatever the case may be. तो अगर मैंने डिसीजन लिया कि भाई मुझे बस से जाना है, तो हो सकता है मेरा डिसीजन गलत हो जाए क्योंकि बस लेट कर जाए। हो सकता है कि मैंने डिसीजन लिया कि मुझे ऑटो से जाना है या मुझे टैक्सी से जाना है, तो मेरा ये डिसीजन हो सकता है सही भी हो गलत भी हो, ठीक है, क्योंकि टैक्सी मिलने में टाइम लग गया, व्हाट आर द केस में भी, या टैक्सी ने अगर मुझे जल्दी पहुंचा दिया तो मेरा डिसीजन क्या हो गया, सही हो गया, ठीक है। आप लोग जो ये वीडियोस देख रहे हैं, लाइव देख रहे हैं, अदरवाइज देख रहे हैं, तो एक डिसीजन ले रहे हैं, और डिसीजन लेने के बाद आप ये डिसाइड करते हैं कि चलो वीडियो देखते हैं, कुछ ना कुछ तो बेनिफिट हमें होगा ही होगा। लेकिन कुछ बच्चे ये सोचते हैं कि अरे नहीं देखने का मन कर रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, इतना वीडियो, लंबा वीडियो कौन देखे, ये टॉपिक थोड़ा सा ऑफ बीट है, खुद पढ़ के देख लेंगे, जो भी कुछ होगा। सो एवरी टाइम यू आर टेकिंग द डिसीजन, हो सकता है बाय सीइंग, वॉचिंग, लर्निंग फ्रॉम मी, यू आर इन अ पोजिशन टू एक्वायर मच मोर मास इन द मेंस एग्जामिनेशन विथ रिगार्ड टू द टॉपिक ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। तो जिन बच्चों ने ये वीडियो देखा, तो हो सकता है, शायद हो सकता है कि आपको ज्यादा मार्क्स मिल जाए इन कंपैरिजन टू अदर एस्पिरेंट। वहां पर भी आपने डिसीजन लिया कि आई हैव टू वॉच दीज वीडियोस। So in every aspect of life, in every situations, in every circumstances, we are taking decisions. Human life is full of decisions. हर्बर्ट साइमन का ये कहना था कि हर समय हम लोग डिसीजंस लेते हैं, कभी डिसीजन सही होता है, कभी डिसीजन गलत होता है, लेकिन हम लोग डिसीजन कैसे लेते हैं? हम लोग डिसीजन लेते हैं, ठीक है, फ्रॉम अल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन। आई मीन कुछ हमारे पास अल्टरनेटिव्स होते हैं, उनमें से हमें कुछ एक को चुनना होता है और वो हमारा डिसीजन होता है, ठीक है। अगर मेरी गाड़ी खराब है, लेट मी गिव द सिंपल एग्जांपल ऑफ दैट। अगर मेरी गाड़ी खराब है और मुझे ऑफिस जाना है, तो मेरे पास 3 ऑप्शन है कि मैं बस से जाऊं, ऑटो से जाऊं, टैक्सी से जाऊं या पैदल ही चला जाऊं। 4 ऑप्शन हो गए, पर मेरा कौन सा डिसीजन ज्यादा बेटर होगा? क्या मुझे पैसे बचाने हैं तो मैं बस से जाऊंगा, अगर मुझे टाइम बचाना है तो मैं टैक्सी से जाऊंगा, अगर मुझे हेल्थ बनानी है तो हो सकता है मैं पैदल चला जाऊं। So every decision do have its own utility in a particular circumstances, ठीक है। जब किसी डिस्ट्रिक्ट में फ्लड आती है, ड्राउट आती है, अर्थक्वेक होता है, या फिर कम्युनल क्लैश ही क्यों ना हो जाए, आई मीन व्हेन एनी टाइप ऑफ डिसरप्शन और डेलिक्वेंसी takes place in a particular district, then the administrator is taking a decision. The administrator, I mean district collector or DM, could take a decision, be very sure, to provide more relief and rehabilitation to the people. Could take a decision to enforce, you can say basically pull establishment or CRPF or CISF, whatever the case may be, in the concerned disrupt area. तो एक डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को अब डिसीजन लेना है अपनी प्रेफरेंस के अकॉर्डिंगली कि पहले उसे लोगों को रिलीफ, रिहेबिलिटेशन, खाना, कपड़े वगैरह पहुंचाने हैं, या पहले उसे कम्युनल क्लैश रोकना है, या पहले उसे लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना है, उसे क्या करना है, ये उसका डिसीजन है। उस सिचुएशन में उसको जो ठीक लगा उसने वो किया, लेकिन हो सकता है ये डिसीजन पूरी तरीके से सही नहीं हो, ठीक है। So Mr. Herbert Simon has given the notion, the principle of bounded rationality. Now bounded rationality means always the decisions are not appropriate, ठीक है। When we are taking the decision, we are actually satisfying ourselves that our decisions are good enough in a particular situation, but it could be the possibility that these decisions are not adequate at all in some other situations. So what the behavioral theory is doing? अब ये देखो, ये behavioral theory करना क्या चाहती है? वो ह्यूमन बिहेवियर की स्टडी करती है एनालिटिकल फॉर्म में, और स्टडी करने के बाद ये बोलती है कि ह्यूमन बिहेवियर अलग अलग सिचुएशन में कैसा रिएक्ट करता है। If most of the persons are reacting in the same manner in a particular situation, then we can develop some universal principles, some universal law. कि normally the humans or the people are behaving in a particular manner in a particular situation. But why we are able to develop some new laws? We are in a position to develop some new laws because we have done a type of descriptive and analytical study of human behavior. So the main feature
विशेषता जो है इस थ्योरी की वो क्या है? डिस्क्रिप्टिवनेस. लेट्स एनालाइज द ह्यूमन बिहेवियर इन डिफरेंट सिचुएशंस. And when we are analyzing the human behavior, we are coming to an outcome. Those outcomes could be applied in different type of administration, in different type of organizations, under the principle called as descriptiveness. मुझे उम्मीद है आपको समझ में आया ये डिस्क्रिप्टिवनेस क्या होता है. खूब एनालाइज करो ह्यूमन बिहेवियर. ठीक है. फर्स्ट इंपॉर्टेंट फीचर. नाउ जस्ट सी द सेकंड इंपॉर्टेंट फीचर. The second important feature is called as a dynamism. Now what this dynamism is all about? ध्यान देना कि there are so many aspects of organizational behavior, I mean behavior of a person within a particular administration or organization, within a particular company or factory. Now what are the dynamics of organizational behavior? पूरे संगठन में जो लोग काम कर रहे हैं, ठीक है, उनमें कौन कौन से हमें डायनामिज्म मिलते हैं. अच्छा, डायनामिज्म से मेरा मतलब है कि देयर आर सो मेनी वर्कर्स व्हिच आर वर्किंग इन अ पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन, सो वी हैव टू स्टडी दैट हाउ दीस वर्कर्स आर गेटिंग मोटिवेटेड. As I often told you, there could be some workers which could get motivated only by monetary factor. Again, there are some workers which could get motivated by human factor. Now, human factor means, of course, respect, actualization, belongingness, samman. So, we have to focus on the dynamism of organizational behavior. I mean, in which particular manner different type of workers and managers are getting motivated. So, we have to focus on motivation. What are the main elements or factors which could motivate a particular worker in a particular situation? जैसे मान लीजिए एक ऑर्गेनाइजेशन में, वो प्राइवेट हो या पब्लिक हो, उसमें एक एम्प्लॉय काम कर रहा है और खूब पैसा कमा रहा है. ठीक है, 15 लाख, 20 लाख, 30 लाख, 40 लाख, 50 लाख, 1 करोड़ पर ईयर का कमा रहा है. अच्छा पैसा कमा रहा है और पैसा कमाने से वो सेटिस्फाई भी है. ठीक है, तो अब सवाल ये उठता है कि वो एम्प्लॉय क्या केवल पैसे के लिए मोटिवेट हो सकता है, और क्या वो हमेशा पैसे के लिए मोटिवेट होगा? वो हो सकता है बिलोंगिंगनेस, मतलब उसका जो रिलेशन है दूसरे लोगों के साथ, उसके कारण भी उस ऑर्गेनाइजेशन में बना हुआ हो. उसे लगता है कि यहां पर बड़ा कंड्यूसिव एनवायरनमेंट है काम करने का. उसे ये लगता है कि जो लीडर है, मैनेजर है, वो उस पर कम प्रेशर डालता है, वो उतना डिक्टेटोरियल नहीं है जो दूसरे के मैनेजर हो सकते हैं. यहां पर काम करने की सुविधाएं जो है, सर्विस कंडीशन है, काफी बेटर है. ठीक है, यहां पर उसको सम्मान, एक्चुअलाइजेशन, रिस्पेक्ट काफी मिलता है. यहां पर that particular person has a possibility to satisfy his own ego also, and that's why that particular person is getting motivated to work in a particular organization. But again, there could be one other type of person also which could get motivated only by or mainly by monetary factor. उसको ये लगता है कि जितना भी पैसा मुझे मिल रहा है उससे मैं ज्यादा पैसा कमा सकता हूं, और क्योंकि मैं ज्यादा पैसा कमा सकता हूं, एक काम करता हूं, इस ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ता हूं और दूसरी कंपनी में स्विच करता हूं. लोग करते हैं. Why? Because they are getting mainly motivated by monetary factor. So, behavioral theory is focusing on the dynamics of human behavior. I mean, what are the main factors which are motivating a person? It could be monetary, non-monetary. It could be materialistic, non-materialistic. It could be respect related. It could be other type of actualization, satisfaction, samman, achievements. Sometimes the people are getting motivated by achievements. अगर वो कुछ अचीव करते हैं तो मोटिवेट होते हैं, और जब उन्होंने अचीव कर लिया तो दूसरा अचीवमेंट के लिए काम करना चालू कर देते हैं. ठीक है, सो दीज एस्पेक्ट्स आर कॉल्ड एज डायनामिज्म. नाउ देयर इज वन मोर एस्पेक्ट ऑफ डायनामिज्म कॉल्ड एज लीडरशिप. सो द थ्योरी इज मेनली वर्किंग ऑन लीडरशिप. आई मीन फोकसिंग ऑन लीडरशिप आल्सो, लीडरशिप स्किल्स. मान लीजिए देयर आर सो मेनी ऑर्गेनाइजेशन, एक कंपनी है, फैक्ट्री है. अगर हम बड़े सेटअप की बात करें, दैट सी लिसन केयरफुली, there are so many administrations which are working in our country also. There are so many private settings which are operationalizing in our country also. When I take the regard of private setting, it means companies like Wipro, Infosys, Tata, Reliance, etc. When I use the term administration, it means the administration of Gujarat, Madhya Pradesh, Maharashtra, Kerala, Tamil Nadu, Northeast. तो मेरे कहने का मतलब यह है कि कभी कभी ऐसा होता है कि आप देखेंगे कि मध्य प्रदेश के अंदर भी there are so many districts, and within the districts there are so many administrators, there are so many district collectors and SDMs. But in a particular district, some district collectors and some SDMs are in a position to, of course, show their leadership skill. मतलब कभी कभी कुछ कलेक्टर्स के बड़े नाम हो जाते हैं. क्यों? क्योंकि उनके पास लीडरशिप स्किल होती है.
They are in a position to channelize the emotions of their own workers. They are in a position to motivate their own workers, I mean their employees of government, to achieve a particular target. कभी कभी आप देखते होंगे कि जो पब्लिक सर्विस डिलीवरी है, चाहे वो एजुकेशन हो, हेल्थ हो, बेसिक सर्विसेज हो, सैनिटेशन हो, वाटर सप्लाई हो, वो कुछ डिस्ट्रिक्ट्स में अच्छी होती है. जैसे व्हेन आई टेक द रिगार्ड ऑफ इंदौर, लिसन केयरफुली, एडमिनिस्ट्रेशन तो वही है पूरे मध्य प्रदेश में, बट व्हेन आई टेक द रिगार्ड ऑफ इंदौर, इंदौर इज रिगार्डेड एज वन ऑफ द मोस्ट, एक्चुअली द मोस्ट क्लीनेस्ट सिटी ऑफ इंडिया फॉर नंबर ऑफ ईयर्स, 4 or 5 years. ठीक है. I mean the administrators which are working in the municipal corporation of Indore, they are in a position to show their leadership skills. Okay? And they are in a position, of course, to motivate every worker, not only every worker but every people, to focus on sanitation, water supply, etc. तो ऐसा नहीं है कि जो एडमिनिस्ट्रेटर है इंदौर में वो कहीं अलग से आए हैं, लेकिन जो एडमिनिस्ट्रेटर इंदौर में है, चाहे वो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हों या चाहे वो म्युनिसिपल कमिश्नर हों, कोई भी हो, they have a particular personified significant leadership skills. So this theory called as behavioral theory is focusing on dynamics of organizational behavior like motivation, leadership skill, decision making, and so on and so forth. And that's why the theory is called as what dynamic theory. इस थ्योरी से पहले किसी भी थ्योरी ने किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में ये जो एस्पेक्ट्स हैं कि लीडरशिप कैसी होनी चाहिए, अच्छी होनी चाहिए, बुरी होनी चाहिए. अच्छा, कुछ लोग ये कहते थे, मैं आपको थोड़ा सिंपल फॉर्म में बताऊं, खूब स्टडी हुई है इस थ्योरी को लेकर कि एक अच्छा लीडर कौन है, मतलब किसको आप अच्छा लीडर मानोगे. कुछ लोगों को ये कहना था कि एक अच्छा लीडर वो होता है कि हु इज इन अ पोजिशन टू चैनलाइज द फर्वर इमोशन ऑफ हिज ओन एम्प्लॉय. मतलब एक एम्प्लॉय है, अगर उसके हीटेड इमोशन है, वो गुस्सेल है, वो तुनक मिजाजी है, वो परेशान करने वाला है, वो डिसरप्शन या डिस्टर्बेंस क्रिएट करने वाला है, तो उसकी एनर्जी को भी वो लीडर क्या हो, चैनलाइज कर दे, मतलब उससे भी काम ले ले. सो एक्चुअल लीडर्स आर दोस, ऑफ कोर्स बी वेरी श्योर, व्हिच आर चैनलाइजिंग द फर्वर इमोशन. फर्वर मींस हीटेड इमोशन ऑफ एन एम्प्लॉय इन अ पर्टिकुलर मैनर टू अचीव अ डिजायर्ड टारगेट. एक अच्छा लीडर वो होता है, कुछ लोग ये बोलते हैं कि अच्छा लीडर वो होता है, सुनिए, जो कोलैबोरेटिव एफर्ट करे, सबकी बात सुने, सबका ख्याल रखे, सब एम्प्लॉयज का ख्याल रखे और एम्प्लॉयज उससे जुड़ जाए. कुछ लोगों का ये मानना था कि जो लीडर्स होते हैं वो बॉर्न होते हैं, कैरिज्मेटिक होते हैं, उनमें लीडरशिप की स्किल अपने आप मौजूद होती है बाय बर्थ. दीज टाइप ऑफ लीडर्स आर कॉल्ड एज कैरिज्मेटिक लीडर्स. वी कैन नेम देम. नेल्सन मंडेला कुड बी अ कैरिज्मेटिक लीडर. Presently also there are so many leaders which are charismatic because of their charisma. Because of their charisma, उनके व्यक्तित्व के कारण, ठीक है, they can guide people, they can direct people, they can of course channelize the people in a particular direction. So behavioral theory is mainly focusing on these dynamic factors of human behavior like motivation, decision making, leadership skill, and so on and so forth. And that's why the theory is called as what? A dynamic theory, focusing on dynamism. So there are two features of the theory. The theory is much more descriptive, analytical, and the theory is much more dynamic, called as dynamism. I hope you got my point. We are discussing the features or elements of behavioral theory. ठीक? तो चलो इन दोनों के बारे में कुछ लिखो और एक दो चीजें मैं और बताता हूं, फिर उसके बारे में भी लिखेंगे और फिर मैं कुछ होमवर्क दूंगा आपको जो मैं रोज करता हूं. ठीक है, चलिए लिखिए. द वेरी फर्स्ट फीचर ऑफ थ्योरी, द टाइटल इज डिस्क्रिप्टिवनेस. Descriptiveness. Continue. The theory is much more. Continue. The theory is much more. The theory is much more. The theory is much more analytical. The theory is much more analytical than prescriptive. Analytical means more analyzing. The theory is much more analytical than prescriptive. Prescriptive. Continue.
It deals with the actual behavior of people. It deals with the actual behavior of people. Actual behavior of people in an organization. In an organization. In an organization by proper investigation. By proper investigation and analysis. Proper investigation and analysis. And analysis. Analysis. ठीक है, continue. According to this theory, some universal laws could be developed. According to this theory, some universal laws could be developed. Some universal laws could be developed about human behavior. Some universal laws could be developed about human behavior. Universal laws could be developed about human behavior and these laws could be applied. And these laws could be applied in different organizational settings. Could be applied in different organizational settings. Different organizational settings. Different organizational settings. I hope the very first feature of this theory, called as a descriptiveness analysis, is very much clear. Second feature, लिखोगे dynamism. Second feature is dynamism. Continue. The theory focuses mainly on the theory focuses mainly on the dynamics of human behavior. Mainly on the dynamics of human behavior, like dynamics of human behavior, like motivation, leadership, decision making, authority, etc. According to this theory, the study of dynamics of human behavior, is much more important to develop new leaders and to motivate the employees of an organization, for attaining a desired target. So I hope so this particular feature of behavioral theory, called as dynamism, is also very much clear in your mind. Now I am taking the regard of one more important feature, actually two more important features. The third important feature, यहाँ पर वो fourth है पर मैं पहले लेना चाहता हूँ उसको, और वो है empirical inclination. I mean the theory always have an empirical, scientific base or scientific inclination. अच्छा, इसका मतलब ये होता है कि what the theory is doing so much different type of research about human behavior.
I mean, they are analytically discussing by data, by information, by investigation, by inquiry, by any type of expedition or about different dynamics of human behavior. मतलब ये थ्योरी ये चाहती है कि by using all the data, all the information, all the supporting system, we have to study, scientifically study the human behavior. And only those knowledge about human behavior could be accepted as a universal law, ठीक है, which are empirically tested. Which are empirically means scientifically tested. ठीक है, जैसे मान लीजिए कि एक डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर ने, अगर मान लीजिए डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर ने डिस्ट्रिक्ट के अंदर अगर बाढ़ आती है, सूखा आता है, फ्लड आती है, ड्राउट आती है, तो उसमें एक मेजर लिए, एक इनिशिएटिव लिए टू प्रोवाइड रिहेबिलिटेशन एंड रीसेटलमेंट फॉर द पीपल, एंड दैट मेजर एबल टू अटेन द डिजायर्ड टारगेट. मतलब ये जो कोशिश करे डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर ने डिसीजन लिया वो बिल्कुल सही था. And the same type of decision or measure or initiative had been taken by the district collector of any other district, where the same type of calamity had taken place, I mean flood, drought or otherwise. So the other district collector also able to attain the desired target, same target, उसने भी अच्छा काम किया. अच्छा, इसी तरह की calamity अगर तीसरे डिस्ट्रिक्ट में आ गई, एक और डिस्ट्रिक्ट में आ गई, ठीक है, and again the district collector or SDM of that particular district has taken the same measures, the same initiative, and of course implemented the same operations which had already been done by the district collectors of other two districts, and those measures are very much successful. And again the third time the district collector of the concerned district able to attain the desired target, वो भी successful रहा. तो अब हम ये कह सकते हैं कि now we are having a conclusion, and the conclusion is that when a district collector is taking a particular type of decision in a particular situation, I mean acting in a particular manner, then those decisions are much more rational, those decisions are much more empirical and scientific. Now we can apply the same human behavior of district collector in other districts also. ठीक है? Now if there is a particular way by which a district collector can motivate its employees, and number of district collectors have motivated their own employees, एक तरीका एक district collector ने इजाद किया जिससे उसके एम्प्लॉय को ज्यादा मोटिवेट किया उसने, और मोटिवेट करने के बाद हमें पता लगा कि उस डिस्ट्रिक्ट में जितने भी काम हो रहे हैं एजुकेशन, हेल्थ, बेसिक सर्विसेज, सैनिटेशन को लेकर वो बहुत अच्छे हो रहे हैं, जो मैं इंदौर का एग्जांपल दे रहा था. तो अब इंदौर का हमारे पास एक मॉडल आ गया. मॉडल ये है कि वहां पर लीडरशिप स्किल अच्छी, मॉडल ये है कि वहां पर जो वर्कर्स हैं मोटिवेटेड है, मॉडल ये है कि वहां की जो एमसीडी है बड़ा अच्छा काम कर रही है, मॉडल ये है कि इंदौर को हर साल सक्सेस मिल रही है एज ए क्लीनेस्ट सिटी ऑफ द कंट्री. सो नाउ वी कैन अप्लाई द सेम मॉडल of leadership, of motivation, of working style in other districts also, in other districts of Madhya Pradesh or other districts of India also. मतलब अब हमारे पास पूरी रिसर्च है कि लीडरशिप स्किल में आपको क्या क्या करना है, मोटिवेट आपको कैसे करना है, तभी तो हर साल इंदौर सक्सेसफुल हो रहा है. हर साल all the workers which are working in Municipal Corporation of Indore, they are highly motivated to sensitize the people of Indore for sanitation. मतलब इंदौर के लोगों को सेंसिटाइज करने के लिए भी तो, उनको मोटिवेट करने के लिए, सैनिटेशन करने के लिए भी तो एक लीडरशिप स्किल चाहिए. हाँ, रूल और रेगुलेशन आप कड़े कर सकते हो, ठीक बात है, लेकिन फिर भी मोटिवेट तो आपको करना ही पड़ेगा लोगों को. ठीक है. अच्छा, अब दो चीजें हो सकती हैं कि इंदौर के लोग, मैं इंदौर के एग्जांपल देता हूं आपको ऑफ मध्य प्रदेश का ऑब्वियस, इंदौर के लोग बड़े सेंसिटाइज हैं सैनिटेशन को लेकर, पर वो क्या उतने ही सेंसिटाइज हैं ट्रैफिक रूल्स को लेकर? शायद नहीं, क्योंकि इंदौर में ट्रैफिक को लेकर अगर आप देखो तो ऑफ कोर्स देयर कुड बी सम प्रॉब्लम्स, देयर कुड बी, आई डोंट नो, देयर कुड बी सम प्रॉब्लम्स, देयर कुड बी सम अदर प्रॉब्लम्स ऑफ कोर्स विद रिगार्ड टू अदर मैटर्स. ठीक है. सो इट डिपेंड्स दैट हाउ the leaders or the administrators are motivating the people and sensitizing the people for a particular activity. And if we are in a position to, of course, study the actual behavior of leader in a particular situation, then we can apply that particular behavior, of course, in other organization, in other areas also. And that's the reason why the behavioral theory is mainly focusing on empirical study. मतलब खूब आपने रिसर्च करी ह्यूमन बिहेवियर को लेकर, रिसर्च करने के बाद आपने डेटा इकट्ठा किया, इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करी, ये डेटा और इन्फॉर्मेशन जो आपने इकट्ठी करी, अब उसको आप अप्लाई कर दोगे दूसरी जगह पर अप्लाई कर दिया, उससे भी सक्सेस मिल गई तो उसको अप्लाई कर दोगे तीसरी जगह पर.
लेकिन only that particular knowledge should be accepted which is empirically, scientifically tested and investigated, proved and substantiated. And that's why the theory is having which inclination? Empirical, scientific inclination, scientific study of human behavior. ठीक है? अच्छा. There is one more important feature of the consent theory, and the feature is, be very sure, that the theory is interdisciplinary. Now, interdisciplinary means what? Be very sure. Here the theory, I mean the behavioral approach, is taking the outcomes of sociology, anthropology and psychology. इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप ह्यूमन बिहेवियर की स्टडी कर रहे हो तो किसी इंडिविजुअल की या ग्रुप की साइकोलॉजी की भी आपको स्टडी करनी पड़ेगी. I want to give one example. ठीक है? There are so many areas in our country, be very sure. ठीक है? And the different peoples of different areas are having their own psychological affiliation, own mental setup. ठीक है? So if an administrator has to motivate the people, has to show some leadership skill, has to bring collaboration and coordination in the employees, okay, then it is required for the leader or administrator to understand the psychology of that particular group of people. अगर आप उनके मेंटल स्टेट को समझते हो, साइकोलॉजी को समझते हो, वो क्या चाहते हैं, ठीक है, उनकी प्रेफरेंसेस क्या क्या है, वो किस तरीके से आपसे कम्युनिकेट करना चाहते हैं. कुछ लोग ऐसे होते हैं जो गवर्न होना चाहते हैं, डायरेक्ट होना चाहते हैं. कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सेल्फ गवर्न होते हैं. कुछ लोग ऐसे होते हैं जो चाहते हैं कि सारा काम लीडर कर दे, हमें कमांड कर दे, जो लीडर ने बोला हम वो काम कर देंगे. कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सोचते हैं कि लीडर बस हमें डायरेक्शन दे दे, बाकी सारे काम हम खुद ही कर लेंगे. So some people are self-disciplined, some are self-command. Okay, and here what the behavioral theory is doing, the behavioral theory is taking the outcomes of different other disciplines also, sociology, psychology, to study human behavior. I mean, how a particular person is behaving in a particular society. If a particular person, employee, worker, administrator is living in a particular society, then what his or her actual behavior is all about. What is the psychological state of a particular administrator, leader, worker, employee, administrator, everyone? Okay? So by taking the outcomes, by taking the features and principles of sociology, psychology and so on and so forth, different disciplines, then only we can study the actual behavior of human mind or actual behavior of organization. So the theory is much more interdisciplinary. ठीक है? अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन में या किसी एडमिनिस्ट्रेशन में ह्यूमन बिहेवियर को एक्चुअली पढ़ना है तो उससे पहले आपको समझना पड़ेगा कि जो आदमी या महिलाएं उस ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रही हैं वो किस बैकग्राउंड से आई हैं, उनका सोशल स्ट्रक्चर क्या है, उनका मेंटल स्टेट क्या है. ठीक है? कुछ लोग होते हैं, जैसे अगर एंथ्रोपोलॉजिक फैक्टर्स की बात करूं तो कुछ ऐसे काम होते हैं जो कुछ टाइप ऑफ लोग ही कर पाते हैं. अब चलो मैं उसमें नहीं जाना चाहता क्योंकि वो थोड़ा डेरोगेटरी डिस्कशन हो जाएगा, लेकिन ऑफ कोर्स वी आर ऑलवेज हैविंग द प्रेफरेंस दैट सम ग्रुप ऑफ पीपल्स आर एबल टू डू सम टाइप ऑफ वर्क. सम टाइप ऑफ वर्क मींस ऑफ कोर्स लेबर ओरिएंटेड वर्क, व्हाट आर द केस मे बी, एंड some group of people are not in a position to do these type of intense labor oriented work. So there are some anthropological features also which are regulating the human behavior, and behavioral theory is working on the aspect of this interdisciplinary connotations. So the basic feature of behavioral theory is that the theory has taken the outcomes of different other disciplines also, sociology, psychology, anthropology, and so on and so forth. And that's why the theory is interdisciplinary. So I hope you understand some basic features of behavioral theory. अब जैसे मैं हर बार करता हूं कि कुछ फीचर्स के बारे में तो मैं डिस्कशन दे दूंगा और कुछ फीचर्स के बारे में आपको होमवर्क दे देंगे. Because all the features are written over here. You can see the features. And then you can do some research with regard to the outcomes of behavioral theory. I hope it's clear. But I think so you are in a position to understand the very basis of this concept called as behavioral theory. चलो अब जो रिमेनिंग पोर्शन है, दो और फीचर्स है, उसके बारे में मैं कुछ डिक्टेशन करा देता हूं आप लोगों को. आप उसको लिख लीजिए ताकि आपको समझ में आए कि लिखना क्या है. ठीक है? चलिए, द थर्ड इंपॉर्टेंट फीचर फोकस is empirical inclination.
empirical inclination or empirical inclination. Empirical inclination or empirical inclination. ठीक है, empirical inclination. Continue. It advocates scientific methods and empirical studies. It advocates scientific methods and empirical studies to understand human behavior. To understand human behavior. Human behavior. Continue. Acceptance of only that kind of knowledge. Acceptance of only that kind of knowledge. Knowledge which can be empirically or scientifically tested. That kind of knowledge which can be empirically or scientifically tested. Empirically or scientifically tested and verified. Tested and verified should be taken. Tested and verified should be taken. Tested and verified should be taken. Should be taken into consideration before developing. Should be taken into consideration before developing. Into consideration before developing. Before developing the universal laws of human behavior. समझ रहे हैं? Before developing the universal laws of human behavior. Universal laws of human behavior. I hope so this particular feature is also very much clear in your mind. And now we are coming to the fourth important feature, what I want to dictate over here. Next one, interdisciplinary. 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 ठीक है. Continue. The behavioral theory accepts the concepts. The behavioral theory accepts the concepts. Accepts the concepts. Outcomes technology. Outcomes technology. Outcomes, comma, technology, comma, data. Outcomes, concepts, technology, data, and perspectives. Perspective matlab viewpoint and perspectives from other social science like, from other social disciplines like, as likhiye, from other social disciplines like sociology, psychology, and anthropology. Sociology, psychology, and anthropology. Continue. It should be noted. And anthropology. Continue. It should be noted. It should be noted that by accepting the outcomes and principles of, it should be noted that by accepting the outcomes and principles of these disciplines, outcomes of these disciplines, some universal laws could be, these disciplines, comma, some universal laws could be, some universal laws could be, some universal laws could be developed about human behavior, could be developed about human behavior, could be developed about human behavior. ठीक है, so I hope so all these I think four features of behavioral theory is very much clear. There are some more features what I have written over here. You can of course see this particular file one more time, and now you can do some research with regard to other features also. So I hope so you are in a position to understand what is the behavioral theory. अब इसका हमें एक और डायमेंशन कवर करना है जो मैं हमेशा करता हूँ, वो है the critical evaluation of behavioral theory. Again,
I'm going to do the critical evaluation of some aspect of this particular theory. We are going to highlight the grounds of criticism, और criticism के ground को highlight करने के बाद हम उसे analyze करेंगे कि ये criticism सही भी है कि नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग 2-3 एंगल और कवर कर लेंगे. One is a negative angle, I mean the critical aspect of this particular theory, other one the positive angle, and then we are going to do the whole analysis of critical and evaluation, I mean the criticism and the positive part, both. So I hope so you understand this particular lecture on behavioral theory. If you have any issue or consideration, then you can message on the same page of YouTube of, the page of PrayasKSG, and I am eagerly waiting for your viewpoint, your feedback, that whether you are enjoying the lectures or not, or whether you are getting benefited, actually duly getting benefited by the concerned lecture series of PrayasKSG or not, ठीक है। तो आप मुझको ज़रूर कमेंट करिए और मुझे बताइए कि आप लोग इससे कितने बेनिफिट हुए हैं, ताकि इन तरह की जो इनिशिएटिव हैं हम लोग थोड़ा सा और लें और कुछ और टॉपिक्स को लेकर आपके कंसेप्ट क्लियर करवाएं, ठीक है, ताकि आपकी प्रिपरेशन ज़्यादा स्ट्रक्चर्ड हो जाए, ज़्यादा एक्यूरेट हो जाए, ठीक है। तो दिस ऑल फॉर टुडे, थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, बी सेफ, बी हेल्दी। हम लोग कल मिलते हैं और कल वी आर गोइंग टू कवर सम अदर एस्पेक्ट्स ऑफ बिहेवियरल थ्योरी, एंड टुमारो वी आर इन अ पोजीशन टू वाइंड अप दिस पर्टिकुलर कंसेप्ट ऑफ थ्योरीज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। चलिए, थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, गुड नाइट, डू वेल, थैंक यू।